Hello everyone. Today's topic of discussion is Coriolis Force. As you already know, we are discussing the questions of prelims examination related to geography subject. And since there was a question in 2024 related to Coriolis Force, so today we have come to Coriolis Force. You know that if you have read geography, you must have realized that the knowledge of Coriolis Force is being applied in understanding different concepts of geography. For example, in order to understand the deflection in atmospheric circulation, the wind circulation, you make use of the knowledge of Coriolis force. Similarly, cyclones में clockwise और anti-clockwise movement को study करने के लिए we make use of the knowledge of again Coriolis force. ओशियानिक करंट्स में हम लोग फिर से कोरियलिस फोर्स के नॉलेज को यूज करते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडरिंग द फैक्ट दैट it helps us to understand a number of concepts in geography. So let's see this topic in detail. But before that, let me show you the question that was asked. So the question was directly related to the Coriolis force. With reference to Coriolis force, consider the following statements. And which of the following statements are correct? So two statements are given. So we'll come to the question later on. Let's start the detailed analysis of this concept, Coriolis force. So under this topic, we'll study first the meaning of Coriolis force. Second thing, we'll study about different conclusions, different submissions related to Coriolis force, and then in the last we'll see the application part of it. So these three things will focus under Coriolis force. Let's start with the basic understanding of the concept. So what is a Coriolis force? So it is a deflecting force which is experienced it is a deflecting force which is experienced by a moving object on the surface of Earth. Obviously including atmosphere as well. So any moving object on the Earth's surface or in the atmosphere of the Earth experiences a deflection force, and that force is named as Coriolis force. So it is an apparent force, obviously अपने को दिख नहीं रहा है, so it is an apparent force, but every moving object on the Earth's surface experiences this force called Coriolis force. So let me give you certain submissions and then I'll explain in detail what exactly is happening on the Earth's surface, how this force is operating. So let me give you certain submissions of this force. So first submission I am making with respect to this force is that it is an apparent deflection force. It is a force which is responsible for deflection of a body
which is moving on the Earth's surface. Second submission, it is very important that the object should move. So it is an apparent deflection force over and over a moving object. So it does not operate on the stationary object. अगर आप खड़े हैं तो आप पर ये फोर्स नहीं लगेगा. So it operates only when the object is in motion. Anyway, we'll explain that in detail, why this deflection is occurring, what is the reasoning behind it. Second submission is, it is responsible for rightward deflection. मैंने बोला डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार है, तो it is responsible for rightward deflection in northern hemisphere and leftward deflection in southern hemisphere. So do remember that it is a deflecting force. When I say it is a deflecting force, it does not change the speed of the moving object. It does not affect the speed of the moving object. It is only responsible for change in the direction of the moving object. Okay. So in the northern hemisphere, it is responsible for rightward deflection. In the southern hemisphere, it is responsible for leftward deflection, or in another way I can say, in northern hemisphere it is responsible for anti-clockwise movement. I'll explain all these things, but do remember these submissions. And in southern hemisphere it is responsible for clockwise movement. Third submission with respect to this. So till now we have seen two submissions. Third one, Coriolis force is directly proportional to the speed of moving object. जो moving object which is experiencing this apparent deflection force, उसके स्पीड पर डिपेंड करेगा कोरियोलिस फोर्स. एंड इनफैक्ट इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन. मतलब अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा देंगे, सो हायर द स्पीड, deflection force or the Coriolis force would be high. Lower the speed, Coriolis force would be lower. We'll explain each and everything why these things are happening. Then fourth submission, let me give you. At the equator, Coriolis force is zero, or say negligible if you move a bit up and down from the equator. So it is negligible close to the equator, and at the equator it is zero. And at the poles, both the poles, it is maximum. So, or I can say, as we move away from the equator towards the poles, Coriolis force increases. So I have given you four submissions, four conclusions with respect to Coriolis force. So let me explain them one by one in detail so that we are in position to understand why these things are happening. So first thing, why this deflection is occurring. So reason for
deflection. So this Coriolis force or the deflection force is attributed to rotation of Earth. We know that कि जो जिस अर्थ पर हम बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं in reality it is rotating at a very high speed. So if I write the speed of rotation of Earth, it is 460 meter per second, or roughly I can write 500 meter per second. So on an average it is moving 500 meter in 1 second. इतना तेज इसका angular speed है. But even then also you do not feel it. That is altogether a different discussion. क्योंकि आपके पास कुछ कंपेयर करने को नहीं है. जब भी आप मूवमेंट करते हो तो यू नीड टू सी सर्टेन थिंग्स इन दी सराउंडिंग. तो आपको कोई सेलेस्टियल बॉडी दिख नहीं रही है, इसलिए आपका जो रिलेटिव मोशन है वो आप फील नहीं कर पा रहे हो. एनीवे, सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अर्थ इज रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Let me also write that this direction of rotation is west to east. So due to this rotation of the earth, we experience force of deflection. जैसे इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं और कि कैसे हम बोल रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है और हम उसको फील भी नहीं कर पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं. लेट्स से कि आप इक्वेटर पे हो, 0 डिग्री इक्वेटर, and your friend A is standing here. You want to throw a ball to your friend A. आपने एक बॉल फेंकी इक्वेटर पे खड़े होके ए पॉइंट पर, जहां पे आपका फ्रेंड खड़ा है या आपके फ्रेंड का नाम ए है. आप जब बॉल फेंकेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट few seconds it will take to reach to your friend, या fraction of second it will take to reach to your friend. तो जितना टाइम आपके फ्रेंड तक उस बॉल को पहुंचने में लगा, डोंट यू थिंक इन दैट टाइम अर्थ वुड हैव रोटेटेड, क्योंकि अर्थ तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है. तो आपका फ्रेंड लेस से यहां पर पहुंच गया. जब तक ये बॉल यहां पहुंचती तो डोंट यू थिंक बॉल सीधी ना जाके बॉल ऐसे जा रही होगी. आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यू बोथ आर मूविंग. इज दैट ओके? तो दिस इज अ डिफ्लेक्शन. स्ट्रेट बॉल जानी चाहिए थी अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं, अगर ये रोटेशन नहीं होता. So since earth is continuously rotating, so your friend is also not stable, it is also moving with the rotation of the earth. तो इसलिए वो डिफरेंट पोजीशन पे लेट्स से ए डैश पे आ गया, तो बॉल यहाँ पहुंची है, तो बॉल in reality it got deflected. So this deflection is attributed to rotation of the earth. Let me also give you one more fact, although I'll use that fact in describing the fourth submission. But rotation of earth, this speed of rotation of earth, let me write this, speed of rotation of earth, this is a very interesting fact, is not same everywhere. It changes with latitudes. So I'll explain this later on, but since I'm talking about the rotation by speed, so you should know this angular speed is not same everywhere. It is changing with latitude.
आई एक्सप्लेन कि वो चेंज कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. ओके, सो दिस इज द explanation to the first submission, that it is a deflection force. एंड ऑपरेट किस पे कर रहा है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो आपने बॉल फेंकी. एनीवे, कम टू second submission. What was the second submission? It is responsible for rightward movement in the northern hemisphere and leftward movement in the southern hemisphere. So it moves the body towards right in north hemisphere and towards left in southern hemisphere. Why it is happening? Let's see this again. This is the earth. This is the equator, 0 degree latitude. मैंने क्या बोला कि आर अर्थ, मैंने एक्सिस को एकदम सीधा बनाया है, बट इन रियलिटी एक्सिस इज अ बिट टिल्टेड, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग एक्सिस को वी ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेट. एनीवे, सो दिस एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन इज वेस्ट टू ईस्ट. मैंने अभी लिखा था. तो सिंस इट इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, लेट्स से आप यहां से बॉल थ्रो करते हैं और यहां पर आपका फ्रेंड है पोजीशन ए पर, तो जब तक ये बॉल ए तक पहुंचेगी कुछ टाइम का गैप होगा. आपको क्या लगता है, इट विल मूव राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड? क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अपना डायरेक्शन है अर्थ के मूवमेंट का, तो डोंट यू थिंक दिस विल मूव दिस साइड, राइट साइड में? तो don't you think this deflection is right to the direction of the movement? Direction of movement क्या है आपकी बॉल की? This one. तो इसके राइट में. So in the northern hemisphere it is experiencing rightward deflection. Southern में देख लेते हैं. Let's say यहां से बॉल आप थ्रो करते हैं, यहां पर आपका फ्रेंड है ए, आपने बॉल फेंकी, बट क्योंकि अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग और इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आपका फ्रेंड कुछ इधर चला हो गया. इस मूविंग बॉल के डायरेक्शन से देखिए, ये बॉल जब ऐसे जा रही है तो इसका राइट इज साइड, लेफ्ट इज साइड. तो ये बॉल व्हेन इट इज मूविंग दिस साइड, तो ये राइट होगा इसका, ये लेफ्ट होगा इसका. तो आप देखिए बॉल विल मूव लाइक दिस, तो इट इज अ लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन. So in the southern hemisphere, it is experiencing leftward deflection. I hope this makes sense. मैंने एक सबमिशन और इसी को दूसरे टर्म्स में दिया था कि in the northern hemisphere it appears to be, not appears, it actually is anti-clockwise. The movement is anti-clockwise, and in southern hemisphere it was clockwise. इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे, I'll explain this with the help of the cyclone, but अभी के लिए to understand and to remember this, let's say कि ये अर्थ है and this earth is rotating from west to east. अगर मैं टॉप व्यू लूं पोल का, नॉर्थ पोल का, तो इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर टू द अर्थ, तो डोंट यू थिंक कि ये रोटेशन जो ऐसे ऐसे हो रहा है ऊपर से, इट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज. ध्यान से देखिए, ऊपर से जो आप देख रहे हैं, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा ऐसे, बट ऊपर से जो आप देखेंगे इट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज. सो दैट इज वाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे ही आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए, आप समझिए कि इस ये अपना साउथ पोल है, यहां से मैं देख रहा हूं तो ऐसे घूम रहा है, तो इट इज अपीयरिंग टू बी क्लॉकवाइज. So in southern hemisphere this movement is clockwise, in northern hemisphere it is anti-clockwise. Anyway, so this is how we have explained the second submission. Come to the third submission. What was that third submission? Third point, I said, with increase in speed
Coriolis force increases. There is a direct relation between Coriolis force and speed. जैसे जैसे आपके मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, Coriolis force बढ़ेगा. So let's see that. Let's say when you're throwing this ball at, let's say in the first case you are throwing the ball at a speed of 10 meter per second. In the second case, you are throwing the ball at double the speed, 20 meter for 20 मीटर पर सेकेंड. आपने स्पीड ऑलमोस्ट डबल कर दिया. जब आपने 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो इसका इनर्शिया 20 मीटर पर सेकेंड के कंपैरिजन में कम होगा 10 मीटर वाले का. तो इसको कम फोर्स चाहिए होगा इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए. बट व्हेन ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा तो इस फोर्स ये और तेजी से आ रहा होगा तो इसको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा डिफ्लेक्ट करने के लिए. सो फॉर दिस रीजन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट is directly proportional to the Coriolis force operating on it. दोबारा बोल देता हूं, जब स्पीड कम होगी तो इनर्शिया मूव करने की टेंडेंसी उसकी कम है, कम स्पीड से है. लेकिन जैसे आपने स्पीड इसको बढ़ा दिया तो इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर लार्ज फोर्स. तो फोर्स कोरियोलिस फोर्स आपका बढ़ गया. Come to the fourth submission, the last submission that I gave you. I said at equator Coriolis force is 0. So let me again give you recall certain knowledge of the school days. या मैं explain कर रहा हूं, you try and understand. ये पोल है सर, पोल इज जस्ट अ पॉइंट. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर एंड दैट इज 0 डिग्री. मतलब इस अर्थ पर अगर मैं इसको अर्थ बोलूं तो सबसे बड़ा डिस्टेंस, सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर है. अगर आप लैटिट्यूड्स को ऑब्जर्व करिए, जैसे दिस इज अनदर लैटिट्यूड, दिस इज अनदर लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स आर दी सर्कुलर लाइन्स जो पैरेलली पोजीशनड है. बट सबसे बड़ा लैटिट्यूड इज इक्वेटर. एंड वी नो दैट कि अर्थ का रोटेशन टाइम is 24 hours. The entire earth rotates in 24 hours. So it means every point on the earth, every place on the earth will complete one rotation of 360 degree in 24 hours. 24 घंटे लगेंगे, चाहे मैं इसको देखूं और चाहे इस प्लेस को देखूं. कोई भी प्लेस अगर मैं देखूं हर सरफेस पे, ये प्लेस मान लेते हैं ये बी है और ये एक प्लेस ए है. ए को 24 घंटे लगेगा फिर से इस पोजीशन पे आने पर और बी को भी 24 घंटे लगेगा इस पोजीशन पे आने पर. लेकिन बी रिलेटिवली कम डिस्टेंस कवर करेगा कंपेयर टू ए, क्योंकि ए इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड. ए का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन घंटे 24 ही लग रहे हैं. बी का डिस्टेंस कम है लेकिन घंटे आपके 24 ही लग रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि बी की स्पीड कम होगी कंपेयर टू ए. ए को और जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वही 24 घंटे हैं ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, वही 24 घंटे बी के पास हैं कम डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो बी का स्पीड ऑफ बी इज लेस देन द स्पीड ऑफ ए. और जैसे जैसे आप अक्रॉस द लैटिट्यूड ऊपर जाओगे देयर वुड बी डिक्रीमेंट इन द स्पीड, देयर वुड बी डिक्लाइन इन द स्पीड. जैसे अगर मैं सी लूं तो सी का स्पीड वुड बी लीस्ट, फिर बी, फिर ए.
ये होगा स्पीड का राइट अरेंजमेंट। वन मोर थिंग, मास को ऑब्जर्व करते हैं। मास एट द इक्वेटर, सर इक्वेटर लाइन ड्रॉ करने के पीछे लॉजिक ही यही था कि इट हैज द ग्रेटेस्ट बल्ज। तो अगर आप अर्थ को ऑब्जर्व करिए तो सबसे ज्यादा बल्ज इक्वेटर पे है, तो सबसे ज्यादा मास भी वहां होगा। यस, तो मास इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर, एंड अगर मैं लिखूं तो लोएस्ट एट द पोल, एट द पोल्स। So can I give this summation over here कि velocity and mass of earth is decreasing as we move from equator to poles? Can I say? As we move away from the equator towards the pole, the mass of the earth as well as the angular speed of the earth will reduce, will decrease. मास और वेलोसिटी को फिजिक्स में वी कॉल इट मोमेंटम। सो बेसिकली द मोमेंटम जो अर्थ का है, उसको पूरे अर्थ का तो मोमेंटम सेम होगा, लेकिन मास और वेलोसिटी पूरे अर्थ का, क्योंकि अर्थ इज अ कंप्लीट बॉडी, तो अर्थ का मोमेंटम विल रिमेन द सेम। क्योंकि मोमेंटम वेरी करेगा तो आपको जर्क फील होगा, तो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मोमेंटम पूरे अर्थ का सेम है, लेकिन मास और वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मास कम हो रहा, वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप इन ऑर्डर टू कंजर्व दिस मोमेंटम, इन ऑर्डर टू कीप दिस मोमेंटम सेम जो अर्थ रख रहा है, डोंट यू थिंक you have to increase the force, the Coriolis force, which is responsible for deflection? So I can say that the mass and the velocity of the earth when we move from equator towards the pole is decreasing at an increasing rate. Let me write this. Mass and velocity of earth's latitudes from equator to poles is decreasing at an increasing rate। ये मैं कैसे बोला कि इंक्रीजिंग रेट पे? क्योंकि सर अर्थ इज अ स्फेयर, तो अगर वो रेक्टेंगल होता तो रेट ऑफ चेंज डिफरेंट नहीं होता, लेकिन जब पहले अर्थ का मास यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो मास में इंक्रीजिंग रेट में डिक्लाइन है, वेलोसिटी में इंक्रीजिंग रेट में डिक्लाइन है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, so in order to conserve the angular momentum, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट है, रोटेशन है ये, एंगुलर मोमेंटम, the what we have written here, let's write the same line. The Coriolis force is 0 at equator and maximum at the poles. I hope this makes sense. मैं एक और एग्जांपल इसको दे देता हूं, एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
ये बॉडी इक्वेटर, अर्थ की बॉडी पे ये इक्वेटर मैंने लिया। हम बोल रहे हैं कि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स इज 0। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर स्पीड एंड द मास विल नॉट चेंज, बट जैसे ही आप ऊपर जाओगे स्पीड ऑफ अर्थ एज वेल एज मास ऑफ अर्थ विल चेंज, या आप नीचे जाओगे तो भी सेम थिंग विल हैपन। तो और इट इज डिक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व दैट मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कम होने की टेंडेंसी है, क्योंकि मास और स्पीड कम हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू कंजर्व दैट मोमेंटम इट हैज टू अप्लाई ग्रेटर डिफ्लेक्शन फोर्स। तो इसलिए इक्वेटर पर 0, पोल पर मैक्सिमम। So now let's see the question. But before that, I'll also tell you about the application part. Then we'll see the question. Applications of Coriolis force. So first application, wind circulation में, wind movement में, wind system को explain करने में it provides the help। जैसे अपने को पता है कि ये अर्थ है, इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर होता है एंड नियरली एट 25 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ वी हैव हाई प्रेशर। जब प्रेशर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे देन आई टेल यू कि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों बन रहा है। बट वी नो कि इक्वेटर पे वी हैव लो प्रेशर, हाई प्रेशर इज एट दी नियरली 25 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ। सिमिलरली इसके बाद फिर से लो प्रेशर एंड पोलर रीजन में वी हैव हाई प्रेशर in both the hemispheres. We know that wind always moves from high pressure to low pressure. This is the direction of movement of it. So there is a pressure gradient, high pressure to low pressure. Wind की टेंडेंसी कैसे होगी सर? हाई टू लो फ्लो करने की। बट सर ये फ्लो मैंने बोला जब भी कोई चीज मूव करेगी इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस। तो ये स्ट्रेट नहीं आएगा, rather this would experience a force of deflection, and force of deflection in northern hemisphere, अभी हम northern hemisphere में हैं, is rightward। तो इस मूवमेंट का राइट क्या होगा? ये होगा। तो इस तरीके से विंड विल फ्लो। सदर्न हेमिस्फीयर में देख लेते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड विल ऑलवेज फ्लो। तो हाई से मैं लो जा रहा हूं, बट ये स्ट्रेट नहीं जाएगा। वाई स्ट्रेट नहीं जाएगा? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस कोरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स। सदर्न हेमिस्फीयर में फोर्स कैसा है? लेफ्टवर्ड। तो ये सदर्न में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? दिस साइड। तो कुछ ऐसा विंड का डायरेक्शन होगा। इसीलिए आप देखो इस विंड को ईस्टर्लीज बोलते हैं। ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही है। और मैंने बताया था कि विंड की नॉमेनक्लेचर का तरीका यही है कि जिस डायरेक्शन से फ्लो स्टार्ट होता है वो नेमिंग कर दी जाती है। तो ईस्ट से स्टार्ट हो रहा, दैट इज वाई ईस्टर्लीज। तो दिस इज वन थिंग। ऐसे ही साइक्लोन्स में वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स वी नो, अभी मैं रूडिमेंट्री टर्म्स में बता रहा हूं, इट इज actually an extreme low pressure system. Cyclone is actually an extreme low pressure system which is characterized by rapid movement of the surrounding air towards the low pressure system. So देखते हैं क्या हो रहा है। Let's say this is some low pressure system. ये low pressure system यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे कहीं डेवलप हो गया। Let's say कि these are the surrounding airs, obviously उसके चारों तरफ एयर प्रेजेंट होगी।
तो यहाँ अगर एक्सट्रीम लो प्रेशर है तो उसके रिलेशन में ये हाई प्रेशर होगा. We know that wind will always have a tendency to flow from high to low. फिर से हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, इस साइड से इस साइड में. बट अपने को पता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी इट विल एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से. एंड लेट्स से कि वी आर इन द नदर्न हेमिस्फेयर. नदर्न हेमिस्फेयर में फोर्स कैसा, राइटवर्ड. तो इसका राइट ऐसे होगा, इसका राइट ऐसे होगा, इसका राइट ऐसे होगा, एंड दिस विल हैव राइट लाइक दिस. तो आप ध्यान से देखो तो क्या आपको इस तरीके का मूवमेंट कुछ दिख रहा है. तो इसीलिए साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फेयर मूव इन एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर. सिमिलरली करंट्स को जब हम करंट्स की जब डायरेक्शन देखते हैं वहां पर भी कोरियोलिस फोर्स ऑपरेट करता है. तो we'll see any kind of movement on the earth surface experiences a deflection force. Now let's see the question. So once you have understood, this question will appear to be easy. So it increases with increase in wind velocity. It increases with increase in the wind velocity. Is it correct? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी आपका कोरियोलिस फोर्स बढ़ जाएगा. क्यों, मैंने बोला इनर्शिया, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो you'll require greater force to deflect it. तो करेक्ट स्टेटमेंट. It is maximum at the poles and absent at equator. करेक्ट. लास्ट डिस्कशन हमने ये किया कि ड्यू टू increasing rate of decreasing velocity and mass, in order to conserve the momentum, the Coriolis force is zero at the equator and maximum at the poles. So this is also correct. So it is asking about the correct statement. So both these statements are correct. C is the right option to this question. So this was about Coriolis force. Do let me know in the comment section how you're finding this initiative. If you're liking this initiative, so let me know in the comment section. Thank you so very much. Have a great day.